Assalamu alaikum. Now we are going to study the heart sounds. शायद आपको याद हो हमने जब शुरू में हार्ट की जनरल फिजियोलॉजी की थी तो हमने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की थी हार्ट साउंड्स की अकॉर्डिंग टू द कार्डियक साइकिल कि कार्डियक साइकिल में हमारे पास हार्ट साउंड्स कैसे प्लेस होती हैं. आज हम इसकी डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह ताला. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So there we are. And you see that the heart sounds can be divided into normal heart sounds. The first heart sound S1 and the second heart sound S2. S का मतलब है sound. S1 पहली sound, S2 दूसरी sound. Apart from the S1 and S2 that we listen to, when we put our stethoscope on the chest, we can also listen to some extra heart sounds by special methods. The third heart sound is called S3. It is an extra heart sound which can be heard in certain people. कब कैसे कहाँ ये हम बाद में करेंगे. And then there is a fourth heart sound which can only be recorded on the phonogram in a normal person. But in case of diseases, this fourth heart sound will be audible by the stethoscope. Then there are certain additional heart sounds like clicks and snaps. इसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होते हैं, ये आपको with time बता देंगे. Coming to the murmurs, these are sounds that are present in between S1 and S2 or S2 and S4. So इनकी भी डिटेल्स जो है वो हम जब डिजीजेस करेंगे उसके साथ हम आगे इनको चेक करेंगे. ठीक है. We must know where to listen for the heart sounds, and of course you are going to listen to the heart sounds on chest of a person, and it is usually on the front of the chest that you try to listen to the heart. कोई वजह आपने नेट भी कर ली नहीं की तो आपको ये अंदाजन बता देती हूँ कि हार्ट जो है वो फ्रंट ऑफ द चेस्ट पर ज़्यादा एक्सपोज्ड है to the surface of the body as compared to the back of the chest. ठीक है. तो अब आप ये देखिए कि अगर आपको एओर्टिक साउंड पता करनी है तो दैट इज राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस. दिस इज द राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस. ये आपकी पहली रिब, ये आपकी दूसरी रिब और इसके दरमियान है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस. दूसरी और तीसरी रिब के दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड second intercostal space. So on the right side of the second intercostal space there is aortic area where the sounds of aorta can be listened to, and then on the left side of the second intercostal space is the pulmonary area where you can listen to the sounds of pulmonary valve closure and opening easily. Then there is tricuspid valve. You can listen to the tricuspid sounds of the tricuspid valve closure on the fourth intercostal space in the lower left sternal border. And then the same fourth intercostal space, it goes down here. और फिर उसके बाद आपका फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में आपके पास आ जाती है माइट्रल एरिया, जिसमें आप करते हैं माइट्रल वेल्व की वॉइस आवाज़ों को सुनते हैं. तो अब इसमें आपको एक और नज़र आ रहा है अर्ब्स पॉइंट. दिस इज इन द लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, और जो बेहतरीन आप साउंड सुन सकते हैं S1 एंड S2 वो लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में सुनते हैं. इसको आप अर्ब्स पॉइंट कहते हैं. अगर आपने इनको याद करना है तो APETM इसके लिए निमोनिक बनाया गया है, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन. तो ये टाइम मैगजीन बना के इन्होंने आपके लिए निमोनिक बनाया है. अगर आपको याद करने में मुश्किल हो, प्रैक्टिकल वाइवा में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. सो प्लीज़ इसको याद करने के लिए अगर आप निमोनिक का सहारा ले सकते हैं तो ज़रूर लें. So now we listen to the heart sounds and we see the first heart sound that we listen to is loop. This heart sound
comes at the beginning of the ventricular systole. Its frequency is 25 to 45 Hz and its duration is 0.14 to 0.15 seconds. It is produced by a closure of mitral and tricuspid valves. अब आपको कार्डियक साइकिल याद है? कार्डियक साइकिल में किस वक्त माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद होते हैं, याद करें. अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि mitral and tricuspid valves are closed when the atrial systole is completed. At the end of the diastole, when the atrial systole is completed, the mitral and tricuspid valves are closed and isovolumetric contraction period starts. ये अब आपका बेसिक्स में से आपकी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके काम आएगी. The first heart sound is produced by closure of mitral and tricuspid valves. It is loudest at the apex. कौन सी जगह है apex? Apex की बात जो हम कर रहे हैं ये apex of the heart की बात कर रहे हैं. Apex of the heart is situated at fifth intercostal space in the mid-clavicular line. अगर आपने चेस्ट का एग्जामिनेशन अभी नहीं सीखा प्रैक्टिकल में तो आप ये बात नोट कर लें, स्टार लगा लें अपने नोट्स में कि आपने एपेक्स ऑफ द हार्ट को पेल्पेट कैसे करना है और वहां पर हार्ट साउंड को कैसे सुनना है. So the characteristics of this sound are, it is soft at a slower heart rate. Look, it is a soft sound. It is louder during exercise and it is weaker in myocardial infarction. It is louder during exercise and it is weaker in myocardial infarction. So, loud S1 you listen to in mitral stenosis and in increased heart rate when there is short diastolic filling time. एक्सरसाइज में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो लाउड S1 होती है और जहां स्लोअर हार्ट रेट होता है वहां सॉफ्ट S1 होती है. Soft S1 can be seen in calcification of stenosed valves, mitral regurgitation, slow heart rate and left bundle branch block. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि फिलहाल आप इतनी डिटेल्स में डिजीजेस में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इट इज सॉफ्ट एट अ स्लोअर हार्ट रेट, लाउडर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, weaker in myocardial infarction. The cause of production of the first heart sound is production of vibration across the valves. So when the AV valves are vibrating after the completion of atrial systole, the AV valves close. When they close, the contraction of the ventricle starts. The ventricle have got papillary muscles. These papillary muscles have attachment of chordae tendineae. मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. This is a ventricle. These are the papillary muscles in the ventricle. This is the valve. This valve is attached by threads made up of fibrous bands to the papillary muscles, and when the ventricle contracts, this papillary muscle shortens, and when the papillary muscle shortens, this chordae tendineae, these fibrous bands are tightened. स्टिफ हो जाते हैं वो, और जब वो स्टिफ हो जाते हैं तो फिर उसमें वाइब्रेशन होती है, एंड दिस वाइब्रेशन इज हर्ड एज first heart sound. Along with that, the walls of the ventricles which are contracting, this chordae tendineae transmits the vibration to the walls of the ventricles. So the vibration produced in the walls of the ventricle is the second source of production of sound
that is the loop sound, first heart sound. Sources are: number one, tightening of the chordae tendineae; number two, vibrations set up in the walls of the ventricle; and number three, by the turbulence in the blood. When the ventricle is contracting and the blood is present in it, which is trying to go back to the atrium, but the atrial valve is now closed. This is producing turbulence in the blood, and this turbulence is also causing vibrations, and this vibration is felt as one, two, and the third vibration, that is of turbulence in the blood, is felt as or heard as first heart sound, the loop sound. Let us discuss certain other aspects of the first heart sound. These are: number one, the components of the first heart sound. The first heart sound has got the mitral component and the tricuspid component. Mitral valve में भी बंद होना है और tricuspid valve में भी बंद होना है. दोनों तरफ valve के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड ने प्रोड्यूस होना है. दोनों एक वक्त में बंद नहीं होते, थोड़ा सा इनमें फर्क होता है. तो माइट्रल कंपोनेंट जो है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड का, यू हियर इट एट द एपेक्स बीट एरिया. और एपेक्स बीट एरिया कौन सा है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन. Tricuspid component is formed by the closure of the tricuspid valve, and you can hear it in the fourth intercostal space at the left sternal border. Third component can be produced due to opening of the semilunar valves. आपकी जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसके शुरू में एवी वाल्व्स बंद होते हैं और उसका जो 0.06 सेकेंड्स का जो उसका वक्फा है उसके अंदर अंदर सेमील्यूनर वाल्व्स जो हैं वो खुल जाते हैं. तो जब सेमील्यूनर वाल्व्स खुलते हैं एओर्टा का भी और पल्मोनरी आर्टरी का भी, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है फ्लो ऑफ ब्लड से, that makes the third component of the first heart sound, and the fourth component is due to turbulent blood flow into the large arteries. So valve से टकराने पर जबकि वो ओपन हो रहे हैं, थर्ड कंपोनेंट बन रहे हैं और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इनटू द लार्ज आर्टरीज is making the fourth component of the first heart sound. Then there is splitting of the first heart sound. Physiologically, mitral valve closes earlier than the tricuspid valve. And so if somebody has got very sensitive ears, or if you are looking at the phonogram का पता क्या होता है? ये recording of the sound waves on the अल्ट्रासाउंड जब आप सुन रहे होते हैं उस पे फोनोग्राम की साउंड वेव्स की रिकॉर्डिंग्स आती हैं, या तो वो इसको फील कर सकती हैं या फिर वेरी सेंसिटिव ears can listen to it. The mitral valve closes earlier than the tricuspid valve, and you can listen to the first heart sound as two sounds because splitting of the first heart sound, that is a physiological phenomenon. But in case of some pathologies like left or right bundle branch blocks, the closure of the mitral and tricuspid valve has got more time lag, and because of that pathological splitting can be heard by ordinary ears with the help of a stethoscope. ऐसे नहीं आप सुन सकते, स्टेथोस्कोप फिर भी लगाना पड़ेगा. अभी तक हमने क्या किया था? हमने लूप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड है. एंड नाउ वी गो ऑन टू द सेकंड हार्ट साउंड, एंड द सेकंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड डुप. आप लूप और डुप में शार्पनेस का फर्क महसूस कर सकते हैं. सो द ड्यूरेशन ऑफ डुप इज स्मॉलर देन लूप. लूप डुप लूप डुप लूप डुप. So you can see the duration of dup is smaller than loop, and the sharpness of dup is more than the loop. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. So dup is a high pitch sound. The frequency of this sound is more than 50 Hz. आपको अगर पिछली स्लाइड पर आप जाएं तो 25 to 45 Hz was the frequency of first heart sound, whereas the duration was above 0.14 seconds. The second heart sound, dup, is best heard in the aortic area and the pulmonary area.
और हम लोग कर चुके हैं कि एओर्टिक और पल्मोनरी एरियाज कहाँ पर सिचुएटेड हैं। सबसे पहले हमने अपनी स्लाइड में वही देखा था। This dup sounds radiates towards aortic and pulmonary arteries. अब आप कहते हैं कि एपेक्स के एरिया में आप सबसे बेहतर सुनते हैं माइट्रल और ट्राइकस्पिड, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है। लेकिन जो सेकंड हार्ट साउंड है, इसको अगर आपने अलग करना है फर्स्ट हार्ट साउंड से, तो आप एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरीज के पाथ के अलोंग अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेकंड हार्ट साउंड ज्यादा प्रोमिनेंट होकर सुनाई देगी। और अगर आप एपेक्स बीट एरिया माइट्रल एरिया की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड ज्यादा बेहतर सुनाई देगी। ये आपने करना है प्रैक्टिकल में, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड्स में, एंड यू मस्ट नोटिस दीज पॉइंट्स व्हेन यू आर डूइंग योर प्रैक्टिकल। The second heart sound dup becomes louder when the diastolic BP is high. It is caused by closure of the semilunar valves. So we see the normal heart sounds, the second heart sound dup is produced by closure of aortic and pulmonary valves. It is best audible at the aortic area and the left sternal edge. This heart sound has got aortic and pulmonary components, and these components are called A2 and P2. Aortic components of the second heart sound are called A2 and P2, and the A2 is heard before P2. So you see, जब आपने एओर्टा के एरिया के ऊपर सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर स्टेथोस्कोप रखा, तो आप जो साउंड सुन रहे हैं वो पहले आपको एओर्टिक साउंड सुनाई देगी और उसके बाद पल्मोनरी साउंड सुनाई देगी, अगर बहुत ही शार्प ईयर्स हैं तो। और अगर किसी की मामूली हियरिंग है तो वो इसको एज अ सिंगल सेकेंड हार्ट साउंड सुनेगा। The splitting of A2 and P2 normally increases during inspiration due to increased venous return. जब इंस्पिरेशन होती है तो एओर्टिक हार्ट साउंड जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है और पल्मोनरी हार्ट साउंड जो है वो देर से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहां पर वीनस रिटर्न ज्यादा हो रहा होता है। इस वजह से स्प्लिटिंग ऑफ साउंड्स को अगर आप गौर से सुनना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट द स्टेथोस्कोप ऑन द एओर्टिक एरिया और द पल्मोनरी एरिया। बेहतर यह है कि आप एओर्टिक एरिया पर ही रखें, और स्प्लिटिंग आपको, आप पेशेंट को कहें लंबा सांस लो, जब वो लंबा सांस लेगा तो आपको ये स्प्लिटिंग A2 और P2 की बेहतर तौर पर सुनाई देगी। So now coming to the components of the second heart sounds, these are due to three reasons. One is vibration of taut semilunar valves when the blood comes back and strikes them. आपने सिस्टली पढ़ी थी, आपने एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व की ओपनिंग पढ़ी और पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व की ओपनिंग पढ़ी, एंड यू नो व्हेन द वेंट्रिकल्स कंप्लीट देयर कॉन्ट्रैक्शन at the onset of isovolumetric relaxation in the cardiac cycle. I repeat, at the onset of isovolumetric relaxation in the cardiac cycle, the semilunar valves close. The blood that had gone into the aorta and into the pulmonary artery now tries to come back because of gravity. When this tries to come back because of gravity, this causes vibration of these tight semilunar valves, and this produces the second heart sound. So आपका जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व वाली साउंड है वो इतनी शार्प नहीं है, क्योंकि वो इतने स्टिफ किस्म के वेल्व्स नहीं है, लेकिन जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं वो बहुत स्टिफ हैं, उनका इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ द आर्टरीज ज्यादा है। इस वजह से dup is a louder sound with a greater pitch because it is being produced by vibration of semilunar valves, which are more elastic as compared to the mitral and tricuspid valves. Coming to the second reason of the second heart sound is turbulence of blood produced when it is pushed back by elastic recoil of closed valve back into the arteries.
आपका सेमिलुनर वेल्व बंद हो गया, ग्रेविटी की वजह से ब्लड ने वापस आने की कोशिश की, उससे सेमिलुनर वेल्व से स्ट्राइक किए, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, दैट वाज फर्स्ट कंपोनेंट। अब जब उनके इलास्टिक फाइबर्स जो थे सेमिलुनर वेल्व्स के, उन्होंने वापस पुश किया ब्लड को इनटू द ग्रेट आर्टरीज, द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी, तो क्या होगा, अब वहां पर पहले से ब्लड मौजूद है, आपका ये जो इलास्टिक रिकॉइल है इसने फर्दर ब्लड उसमें थ्रो किया है, दैट प्रोड्यूसेस टर्बुलेंस। The turbulence produced causes vibration, and this vibration is heard as a sound. Third is vibration in the valves and the arteries are transmitted to the chest wall, and these are then heard by the stethoscope. वैसे तो अगर चेस्ट के ऊपर कान भी रख लें, कुछ भी ना हो किसी के पास, कोई गांव में खड़ा हुआ है या कोई ऐसी जगह है जहां उसके पास स्टेथोस्कोप नहीं है, तो सिर्फ कान ही रख ले अपना चेस्ट वॉल पर, तो उससे सेकंड हार्ट साउंड जरूर सुनाई दे जाएगी। And now coming to the splitting of the second heart sound, the aortic component comes earlier from the pulmonary, and that is a normal phenomena, physiological phenomena. Aortic component comes earlier from the pulmonary component by 0.02 to 0.05 seconds. और क्या आपका ख्याल है, आप इतनी स्प्लिटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्प्लिटिंग हुई हुई है? आई डोंट थिंक कि हमारे कान इतने सेंसिटिव हैं। Physiological in inspiration, where it will be heard as drup, drup, dup की बजाय आपको नॉर्मली इंस्पिरेशन में ड्रुप सुनाई देगा, जिसमें एओटिक कंपोनेंट जो है वो डीआर है और आरयूपी जो है वो आपका पल्मोनरी कंपोनेंट है। अगर कोई डिजीजेस हो जैसे कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तब इसमें आपकी पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ द हार्ट साउंड्स मौजूद होगी, और उसमें ये जो वक्फा है दैट विल बी मोर देन 0.02 और 0.05 seconds. So now we come to the production of certain other sounds, the S3 and S4, and these are extra hard sounds apart from S1 and S2 that you listen to during a normal routine examination. The extra hard sound S3 is produced by tightening of the papillary muscles at the end of the rapid diastolic filling. हाँ जी, अब आपको याद है रैपिड डायस्टोलिक फिलिंग का पीरियड कौन सा था? आपको कार्डियक साइकिल याद है? कार्डियक साइकिल में रैपिड डायस्टोलिक फिलिंग comes in the initial portion of the diastole. Isovolumetric relaxation period has finished, and now the initial portion of the diastole, the ventricular wall is relaxed and a lot of blood is coming to the ventricle. This produces tautening of the papillary muscles, and this produces vibration, heard as third heart sound. अब इसकी ड्यूरेशन कहाँ, किस वक्त इसकी लोकेशन है, टाइमिंग क्या है? इट इज हर्ड इन द मिड डायस्टोलिक पीरियड। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इट इज अ लो पिच्ड साउंड एंड इट इज हर्ड बाय द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। आपको पता है बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप क्या होती है? इसके लिए यू हैव टू लुक एट द स्टेथोस्कोप in your practical time, and you will see that there is a big area of the stethoscope which is called diaphragm, and there is a smaller area of the stethoscope on the back of the diaphragm, and that is called the bell of the stethoscope. So it is used to listen to the low pitched sounds. This third heart sound is louder at the apex and can be heard in children and young adults physiologically, that is without any disease, in children and young adults where the filling of the heart is very proper. At that place you can listen to the third heart sound. Coming to the diseases in which there is third heart sound present, number one is cardiac failure. During cardiac failure, at the mid diastole, you can listen to this sound, and at that time it is called gallop rhythm. Gallop rhythm में ऐसे लगता है जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। आपकी लुक डुब आई नॉर्मल में, और फिर उसके बाद वक्फा देकर दोबारा से लुक डुब आई, तो उसमें तो आपकी जो सेकेंड हार्ट साउंड और नेक्स्ट साइकिल की फर्स्ट हार्ट साउंड है उसमें काफी सारा गैप है।
लेकिन अगर उसके बीच में एक साउंड और आ जाए, थर्ड हार्ट साउंड, और वो कार्डियक फेलियर में लाउड भी होगी, तो फिर आपको ऐसे लगेगा लुक डुक लुक डुक लुक डुक लुक। उसकी वजह से आपको बीच में गैप नहीं सुनाई देगा, बल्कि घोड़े की टापों की सी आवाज सुनाई देगी। उसको हम कहते हैं गैलप रिदम। Then you can also listen to this sound in aortic regurgitation, and then in the mitral regurgitation. In both these cases, the third heart sound can be heard in patent ductus arteriosus. ये एक condition है in which there is a link, arterial link, vascular link between the aorta and the pulmonary artery. ये congenitally पहले present होता है fetal circulation में और ये बंद नहीं हो सकता। तो patent खुली हुई डक्टस ब्रांच आर्टीरियोसस आर्टरी की, तो ये आर्टीरियल एक ब्रांच है खुली हुई जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान कनेक्शन बनाती है, ये खुली रह जाती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और वीएसडी इज अनदर कंडीशन। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये दोनों कंजेनिटल है, पीडीए और वीएसडी, जिसमें आप सुन सकते हैं थर्ड हार्ट साउंड। So again, a brief description of the third heart sound. It is 0.1 seconds in duration. It is a weak sound normally. It is a rumbling sound at the middle third of the diastole. ये इसकी timing है. The ventricle was lax in the initial part of the diastole, and now when the filling of the ventricle occurs rapidly, the papillary muscles are tightly stretched and vibrate when the blood comes from the atria. This sound is recorded in first half to one third of the population, and it is heard in many young adults normally. If you listen to a sound that is strong, loud sound, third heart sound at the mid diastole, then this is a pathological condition of the left ventricular failure when the heart sounds look like a gallop rhythm, जैसे घोड़े की टापों की आवाज होती है, rather than the loop and doop sounds of the systole and diastole. So coming to the extra heart sounds, sound number 4, fourth heart sound is produced by atrial systole, which is pushing the blood into the ventricles by force. This can be recorded normally on the phonogram as a weak vibration, and it is a sound that is heard during diseases as the fourth heart sound just in the late part of the diastole, and it is a low pitch sound. It is louder than the third heart sound. It has got left ventricular components. When the left ventricular diseases cause the production of fourth heart sound, or it could be of right ventricular cause when the fourth heart sound is produced by right ventricular diseases. So coming to the left ventricular diseases, the systemic hypertension, aortic stenosis, acute myocardial infarction, acute mitral regurgitation, and advanced age. All of these diseases produce a stiff ventricular wall, and this stiff ventricular wall, when it receives last part of the ventricular filling by the forceful atrial systole, this produces vibration in the blood in ventricles and the ventricular wall, and this component is left ventricular fourth heart sound. In case of the right ventricular fourth heart sound, the reason would be pulmonary stenosis or it could be pulmonary hypertension. Both of these diseases cause thickening of the right ventricle, and this thickening of the right ventricle produces stiffness of the right ventricle, and this produces fourth heart sound. So here we are talking about the fourth heart sound. It has got very low frequency, 20 cycles per second. It is recorded in only 1/4 of the people. सुनते नहीं हैं आप इसे normally, सिर्फ फोनोग्राम पर रिकॉर्ड करते हैं और वो भी in only 1/4 of the people. It is heard just before the first heart sound, and it is because of atrial hypertrophy or ventricular stiffness.
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये वेंट्रिकुलर स्टिफनेस नजर आ रही है, एट्रियल हाइपरट्रफी और वेंट्रिकुलर स्टिफनेस, एंड इट डिसअपियर्स इन एट्रियल फिब्रिलेशन। हाँ जी, कोई वजह होगी जो डिसअपियर हो जाएगी एट्रियल फिब्रिलेशन में? हाँ जी, गैस करें वजह क्या हो सकती है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में आपके पास ये फोर्थ हार्ट साउंड किसी सूरत रिकॉर्ड भी नहीं होती। हाँ जी, वजह ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में द एट्रियल सिस्टली, प्रॉपर एट्रियल सिस्टली इज एब्सेंट बिकॉज द एट्रियम इज अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल यूनिट एज अ सिंसिटियम। याद आ गया? थैंक यू। So coming to the additional sounds, additional heart sounds, there are clicks and there are murmurs. So the clicks are produced by abnormal doming or prolapse of abnormal aortic or pulmonary or mitral valves during systole. ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली हो रही है उस वक्त अगर एओर्टिक वेल्व की एबनॉर्मल प्रोलैप्स हो जाए इनटू द कैविटी, या पल्मोनरी वेल्व जो है वो वेंट्रिकल में प्रोलैप्स कर जाए, या फिर माइट्रल वेल्व का प्रोलैप्स हो जाए, तो उससे क्लिक्स पैदा होती हैं। ये क्लिक्स जो हैं ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं और ये एबनॉर्मल सिचुएशन में पैदा होती हैं। ये जो माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स है ना, ये बहुत कॉमन है और ये प्रेग्नेंट लेडीज में, और उस वक्त जबकि आपकी कोलेजन जो है वो हल्की खराब हुई हुई होती है थोड़ी सी, उन डिजीजेज में ये माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स ज्यादा ऑब्वियस दिखाई देता है। तो दे कुड बी, दे आर सिस्टोलिक क्लिक्स, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टली में प्रोड्यूस होंगे। दे कुड बी इनिशियल इजेक्शन सिस्टोलिक क्लिक्स और दे कुड बी पैन सिस्टोलिक क्लिक्स। कहीं भी सिस्टली में आ गई है तो वो सिस्टोलिक क्लिक्स कहलाएंगी, और स्पेसिफिकली अगर वेल्व खुलते ही, एओर्टिक या पल्मोनरी वेल्व खुलते ही अगर ये आवाज आई है तो फिर ये इजेक्शन सिस्टोलिक क्लिक्स होंगे। So ejection systolic clicks, they are present in early part of the systole just after first heart sound. They are heard at the aortic area and the pulmonary area. They are caused by aortic or pulmonary stenosis while valves are still mobile, and their doming in early systole produces dyspnea. तो डोम कर जाते हैं, कहाँ की तरफ डोम करते हैं जो एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व हैं? इनके डोम की डायरेक्शन आपको याद है कहाँ होती है? टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल होती है या टुवर्ड्स द आर्टरी होती है? लेट्स ड्रॉ इट हियर। This is the ventricle. Suppose this is the pulmonary artery. So the valve has a shape like this. इसका डोम कहाँ है? इसका डोम जो है यहाँ पर है। तो जब ये एबनॉर्मल डोम होगा, बहुत ही ज्यादा बल्ज करेगा इनटू द वेंट्रिकल, तो उस वक्त ये बंद होने पर इजेक्शन एस वन के बाद ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ये इसकी अर्ली सिस्टोलिक होगा, तो उस वक्त ये खुलता है। जब ये खुलता है तो इसकी डोमिंग हो जाती है, और वो डोमिंग जो है इधर की तरफ होती है, वेंट्रिकल की तरफ, और इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। And when we were talking about the classification of different types of sounds that you can hear from the heart, we said that there was first heart sound. Here you see at the start of the systole, the first heart sound. Then we said that there was a second heart sound, a third heart sound in the mid diastole, and the fourth heart sound. Then we said these three and third and fourth were the additional sounds, and then we said that there were extra sounds that could be the murmurs produced in the heart, precordium. So, in B portion of this diagram, you see a murmur produced in aortic stenosis. This is a systolic murmur. It is a loud murmur. It has got, so how are you going to study this murmur? Sight. Where is the murmur loudest? Character. Is it soft? Is it blowing? Is it increasing or it is decreasing in intensity? Where does this murmur radiate to? What is the intensity of the
Murmur, is it a loud one or a low one? What is the pitch, high frequency or low frequency? What is the timing? Is it systolic or is it diastolic? तो ये जो डायग्राम है इसमें मैंने आपको सारे मर्मर्स इकट्ठे एक दफा दिखा दिए हैं और अब हमने इनको वन बाय वन पढ़ना है.